Live again on. Hello again. This is Saima Dillon. You're watching Heart to Heart with Saima and Kalpana. And we have 30 seconds before we go live on the radio. If you are in the Dallas Fort Worth area, you are able to listen to us on 104.1 FM, 700 AM, and or join the caravan.com. You're able to listen to us from there or right here where you're watching us. So, we're going to begin Heart to Heart in just a few seconds. And uh, All right, welcome back, everyone. This is Saima Dillon, and you're listening to me on Heart to Heart. We come to you every Thursday from 1 to 3. Actually, 1:05 to 1:30, I do talk about real estate market update. And then at 1:35, after the break, Kalpana, who is back from India and who has recovered from her toothache and who has recovered from multiple other jet lag and an X, Y, and Z. And so she's, hey, Kalpana, welcome. Hey, Saima, how are you? Oh, you know what? It's a beautiful weather out there. It Finally, is. we had a rain last week, Uh-huh. and we enjoyed. Of course, we need much needed actually. बेटा काफी टाइम के बाद लग लगता है कि टेक्सन वाली भूल भुला गई कि बारिश होता क्या है. But we're back again to the routine. हमारा शो हाथ टू हाथ जो हर थर्सडे को होता है. And hi listeners, I hope you also doing good. और जो आज का टॉपिक है वो है कि how to be emotionally strong. क्योंकि सर अक्सर जो है हम लोग काफ़ी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, एक अच्छी फैमिली हो जाती है, कार खरीदते हैं, हाथ में फ़ोन होता है, लेकिन जाने अनजाने में हम हमारी माइंड पे वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स लिंगरिंग इन आवर माइंड कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, एंड देन उसकी वजह से क्या होता है कि अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम स्ट्रेस में पड़ जाते हैं. सो हाउ कैन बी इमोशनली स्ट्रांग, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वाई पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और अपसेट हो जाते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं पाते हैं, किसी और पे नाराज़ हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ें जब इमोशनली हम वीक होते हैं ना, that's when all these triggers. So, just kind of to segue back into last week's show. Last week's show के ऊपर I had talked about. I'm reading a lot about this person. His name is Joe Dispenza, and he talks a lot about neurology and the brain and our जो हमारी frequency का level है. And something extremely cool that I learned from him recently, Kalpana, because I go on my walk, take my dog for a walk every evening, and when I go on the walk, I like to play something and I listen. So something really cool that I learned from him, what he told me, is that if you could detach your physical being from your inner person, Okay. and then you step outside of your physical body and you stand there as a bystander and you observe yourself Yourself, okay. as you're functioning, as you're dealing with people, as you're talking to your kids, as you're doing everything, and watching yourself with your thoughts, whatever goes through your mind, these different negative emotions that we experience as human being: hatred, jealousy, Right. envy, judgment, so many of these negative emotions, and you're in that moment. So that is, since I heard him, I was very intrigued, Kalpana, and I started um, putting myself outside my physical body Mm-hmm. and observing myself. And when I started observing myself, I started fixing myself, because as soon as I was feeling some negative emotion, or I was feeling down, or I was feeling like overwhelmed with maybe things going wrong, Right. right? And I'm standing there and I'm like, I see myself sitting there, dejected, or sitting there with my shoulders drooped, or sitting there in a worried stance. To us point के ऊपर, I that me standing on the outside, observing this person sitting there in that stance, Mm-hmm. I would tell myself that, hey, you know,
You can't do that. आप बैक स्ट्रेट करो, अपना डिमीनर ठीक करो, अपना अपना चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेके आओ, सब ठीक हो जाएगा. It has I so you know it's like this constant person who's standing there and who's constantly now telling me कि ये नहीं करो, don't do this, don't do that, this is this is negative energy, you're feeling ill towards the wrong person or wrong thing, and it's like self-correcting continuously. That's really good. I mean, it sounds to me right now, because I've heard this the first time, and it really sounds dramatic, but I'm sure it's very practical and very to the fact, to the core, because introspecting yourself is very important. क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि उसने हमें ये कहा, उसने ये किया, उसने नहीं सुना, ये इन्होंने कुछ ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा बोलते हैं. लेकिन ये जिस सारी बैरियर्स को हटाकर अब खुद पे ही हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद पे ही हम सोचें कि हमारी क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, एंड देन दैट वाज अ वंडरफुल थिंग कि how we can just say, and then just that slouching body Yeah. of yours, and then you just like Self-regulating warming yourself. Yes, and that's very important. और सबके लिए बहुत ज़रूरी है. Self realization is very important, and then working on it is the most important. Once you get awareness, and then after that उसके उसके अंदर आप क्या practice करते हो, चाहे रोज ना सही, लेकिन बहुत बार you need to just make it a point कि आप दिन में या फिर हफ्ते में, based on your lifestyle, at least आप करें consistently 4 दिन हफ्ते में या 3 दिन हफ्ते में, at least you're there at some point, you're working on yourself. और ये एक हैबिट बन जाती है. So it's a self check, right? It's just actually जो चीज मेरे लिए चल रही है वो ये है कि जैसे ही मैं ये फील करती हूँ overwhelmed over something, or I'm having a bad day, or I'm having a difficult moment, तो ऑटोमेटिकली वो एक किस्म से जैसे वो एक जीनी की तरह, वो एक पर्सन which who looks like me एकदम से pop self clone who says hey stop, ये right नहीं है, ये ऐसे मत feel करो, uplift yourself, be happy. Actually, one of my friends who recently actually changed her job, Mhm. and she was working there for a couple of years, and then after COVID, then she decided to. COVID also has given, it was actually a sad thing that a lot of people have lost their lives. Lekin, it also was a time where we were introspecting ourselves. Most of them were thinking कि अभी ये नहीं कुछ और करना है. काफी लोगों ने ये भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, which is a good thing also, क्योंकि वो एक ठहराव आ गया था जिंदगी में, जब हम जो अपने रेगुलर लाइफ से नहीं कर पाते हैं, तो सबको सोचने का, काफी लोगों को सोचने का वक्त मिला. So she decided to change her job, और जिसमें वो काफी used to थी, कंफर्ट जोन में थी. जैसे उसने चेंज किया, वो एक हफ्ते के अंदर इतनी ओवरवेल्म हो गई कि उसकी लगी, होए भगवान, मैं किस जगह पर आ गई हूँ. एंड शी वाज सो स्ट्रेस्ड, एंड उसके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन घर आती थी, तो घर शी वाज टेकिंग दैट स्ट्रेस टू होम, एंड देन दैट स्ट्रेस टू द होम. then she thought कि नहीं, या तो मैं इस जॉब में रहूंगी या मुझे जॉब छोड़ना है. Then of course I told her also कि देखो कि just थोड़ा सा रुक जाओ, just see this, because you were in comfort zone for a long time. What is the main thing that you're not liking it? You're not liking the different lifestyle, the management. What is the thing bothering, the topmost thing? अपने आप सोचो, थोड़ा मतलब ठहरो, 1-2 दिन टाइम दो, अपने वक्त दो, क्योंकि इस लाइफस्टाइल में भी तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा if you want to work. Then she gave that time to herself, and she thought about it. Now she continued it. It's been, I think, year and a half or so, and she doesn't have much complaints, क्योंकि देखो हर वर्क प्लेस में किसी ना किसी को छोटी मोटी complaints वगैरह हो जाती है, but the majority of the part, if you think you can work in a proper way and you can emotionally make yourself strong, तो चाहे सिचुएशन कोई भी हो साइमा, चाहे वो या तो नया जॉब हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी, फ्रेंड्स ने कुछ कहा, जजमेंट है, you are able to take that, embrace it, and do not lash out at them, and do not be also sinking in yourself too. तुम अपने आप को उभार सकते हो, क्योंकि भाई ये तो जिंदगी की गति है, ये चलती रहती है. So we're going to cover a lot of things today, that what can we do to make yourself emotionally strong regardless of whatever is happening around you. And इसमें भी एक चीज आ जाती है कि whenever you try something new, there's always a learning curve.
my daughter just left her. She hasn't left her existing job, but she started an additional job at a coffee place, and she is working there. And the past 2 3 days, that this is her first week, and the past few days that she spent over there, she's been like, "Mom, I'm so overwhelmed. The learning curve is huge because you have to have a license for a barista." And she's been doing it, and she's been like, I have no time to sit down for a minute. I have no time to even take my break. I even forgot about taking my break. But the thing is, there's a learning curve, and when the learning curve is over, and she becomes comfortable, and then she's going to see people over there, she's going to see people coming on a regular basis, and it's interactive, and you see, so for some people, and I think for her, it will be something nice to try to see if this is something that she enjoys doing, because these are all temporary jobs, and we'll see. So definitely ये चीज आ जाती है. And the other thing was also that when you try something new, it takes time. इट टेक्स टाइम हर चीज क्योंकि जैसे मैंने भी सीखा है मतलब ऐसा नहीं कि वी जस्ट हैड द मिरेकल दिस एवरी डे हम भी सीखते हैं लेकिन ये सीख सीख के हम आगे चलते हैं सो नाउ आई वुड से exactly that seldom I get upset on the things that happen around me there of course there are days when even I have like that slouching body and ऐसा होता है but very rare most of the time I'm able to embrace things और मैं in fact अगर हो सकता है तो उन्हें help करती हूँ जो भी if they need any help and आई जस्ट मूव आउट एंड ऐसे कि कोई बात नहीं यार क्योंकि कोई बात नहीं एंड लेट गो ये कहने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस बिकॉज डोंट गेट कैटास्ट्रोफाइज एंड कि भाई it happened again with me oh my god how could I do this how could they do this मैं तो एक idiot हूँ या वो एक idiot है ये सारी बातें जो होती हैं तभी आती हैं जब हम इमोशनली बहुत वीक होते हैं हमारे पास वो सोचने की ताकत नहीं रहती है कि भाई ये चीज़ें ओके इट इज़ ओके थिंग्स आर हैपनिंग आई नो things are happening without your knowledge और तुम्हें तुम्हें इस आदत नहीं है लेकिन you know what to do only if you just get awareness and then practice on it consistently. And but again, this is something very difficult to do. But I think this is something that you can work on as you meditate, and it can sometimes take years and years and years. जो हमारी हैबिट्स सदियों से चली आ रही हैं, उन हैबिट्स को तोड़ना, उन हैबिट्स को ब्रेक करना, अपनी एनर्जी को चेंज करने में it will take years. But अगर आप अपने आप को उस एक्चुअल चीज से डिटैच कर ले, that is going on, and then you let that thing happen, but you don't attach yourself from an emotional perspective to the outcome, then you're able to kind of just जैसे दरिया बह रहा होता है, अब दरिया जिस तरह बहता जाता है and the river keeps flowing, you keep just flowing with the river wherever the river takes you because you're not attached to the outcome. And on that note, if you remember, जब मैं आई थी इंडिया से और मैं काफी स्वीट्स लेकर आई थी याद है और I am like I don't know if listeners already know that I love sweets I crave for them सामने अगर रखा हो तो मुझे लगता है कि मेरे लिए रखा है कि आओ मुझे खा लो तो मैं खा लेती हूँ but 2 हफ्ते से I've given up कि नहीं मैंने कहा कि I'm going to give up the sweets for some time and believe me सारा ये 2 हफ्ते हो गए हैं and मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं चाहता बिकॉज मैंने ठान लिया था कि नहीं अब क्योंकि दैट्स समथिंग लाइक हमेशा कुछ अगर खाना भी खा लिया तो आई शुड लुक फॉर द स्वीट सो इट्स अबाउट हाउ यू प्रिपेयर योर माइंड एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू प्रिपेयर योर माइंड एंड यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन दैट ट्रस्ट मी कोई चीज़ अगर सामने दिख भी जाती है तो यू आर एबल टू पिवट योरसेल्फ एंड मूव एंड डू समथिंग दैट यू वांटेड टू डू. Well, with that, it is 1:47 in the studio, and we are going to play our first song because I know you guys called me and tell me कि songs necessary नहीं है, but I feel कि at least एक घंटे में एक तो बजा सकते हैं. So here we go, and I hope you enjoy it. So. So there are some points. Hold on, Kalpana. Yes, Hassan, I think both the live stream sessions should be on my personal page, which is Saima Malik Dillon, and the other one should be on Saima Dillon, which is my business page. So I
Hassan, I can't play any song because Facebook doesn't allow us to play songs. As soon as Facebook hears us playing a song for because of copywriting, it just shuts the show down. So I am sorry about that. Both look different. Okay, well. Yes, because one is through a different software, and we are streaming live on we are streaming live using StreamYard on my Saima Dillon, the business page, and then LinkedIn and YouTube. And then right here where you're seeing me, this is where I'm live streaming continuously on my personal page, which is Saima Malik Dillon. So yes, there are two different streams going on. But then the StreamYard one is on multiple platforms. So, Kalpana, give me just one moment. So, thank you all for being here. Hey, Muin, Shukriya. Hey, Dan, how are you doing? So good to see you here. Jaskaran, thank you for being here. Farzana, thank you. Sajid, how are you doing? Asif Lagari, Dr. Akil Khan, Bilawal Rajput, I'm good. Thank you all for being here. Anjum Zia, Anu Khan, Mohsin Mirza, Naz Hassan, Furqan. Hey, Hassan, hello again. And so thank you all for being here. Thank you all for joining. And okay, so Gana chal raha hai. Okay. Okay. कल्पना क्या बोल रहे थे? No, मैंने तुम्हें शेयर किया था, so we can get to this point somewhere. You know वो मेरा वो जो तुमने शेयर किया है ना वो टेक्स्ट इस फोन के ऊपर आया है. हाँ, इस नंबर को बेशक अगर किसी और नाम के अंदर सेव करके इसको बिल्कुल हटा दो ताकि यूज द अदर वन ताकि 1116. यस सो उसको यूज करोगी तो वो that I can see during the show. So you have 3 phones. I have 2, but the third one is I'm just using it for Instagram streaming. It doesn't have a SIM in it. I have 4 devices actually. Because one is being used for Instagram, the computer is being used for the YouTube and all, and so we bless you. We have 30 seconds. So I don't have it. So you can start. And oh, you sent it. Got it. All right. So thank you all for being with us here today. And so let's see. So you're listening to Saima and Kalpana on Heart to Heart. Like even. Sorry, I had pressed the wrong button. But anyways, you're listening to Saima and Kalpana on Heart to Heart. We come to you every Thursday from 1 to 3. Once a 1:05 to 1:30, we talk about real estate, and then we go into Heart to Heart. So Kalpana, you were talking about emotionally making ourselves strong emotionally. Right. How can we just practice things? Think about our thinking, and then that was wonderful analogy that you gave it. Small anecdote that तुमने बताया कि किस तरह से वो जब आप बता रहे थे तो मैं विजुअलाइज कर रही थी कि वो एक एवेंजर्स मूवी है, उन्होंने एक धक्का मारा अंदर से, वो हमारी जो आत्मा है स्पिरिट है बाहर आई है, इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, हमें बता रही है. बट दैट वाज टू द कोर ऑफ इट. अगर हम इसे करें, अगर हमें अपने आप को भी जैसे सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये मैंने पढ़ा था कि ना कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड बात करिए अपने आप से. आपकी जो वीकनेसेस है, व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू, नोबडी इज लिसनिंग टू यू, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ. क्योंकि पब्लिक में बात करोगे तो लोगों की ये पागल है और क्या बात करे अपने आप में. लेकिन द थिंग इज कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हम अक्सर जो है या तो लोग पास्ट में रहते हैं, और जो लोग पास्ट में रहते हैं वो अक्सर डिप्रेस्ड होते हैं, या तो लोग फ्यूचर में रहते हैं और जो फ्यूचर की बात सोचते रहते हैं कि ये क्या होगा, वो एंग्जाइटी हमेशा उनके होती है. तो माइंडफुलनेस यानी कि बीइंग इन अ करंट स्टेट,
relate. क्योंकि जो हम बात कर रहे थे तिच नान हान की, एक बार we were talking about anger, why people really get angry, frustrated and sad, and all these things actually one after the other coming to us when we either live in past for too long or in the future for too long. या तो एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है. तो बीइंग माइंडफुल यानी कि बीइंग सेइंग इन द प्रेजेंट और आज के दिन को जस्ट एंजॉय करें कि जैसे कि आज का वेदर अच्छा है तो अपने सारे काम धाम छोड़े, वॉक पे जाए या फिर थोड़ी देर बैठ के फैमिली से बात करें, या फिर कभी कभी जस्ट 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 रिलैक्स योर सेल्फ. कोई बात नहीं, कोई चीज अगर थोड़ी देर लेट भी हो जाती है और नहीं भी होता है, दैट्स ओके. इतना It's स्ट्रेस करने की okay. दिमाग में जरूरत नहीं है. पर आई थिंक इमोशनली इस बात को आई थिंक अपने आप में अंदर घोलना और घोल के उसे बार बार उसे अपने आप में ही सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज थिंक अबाउट योर थिंकिंग, कि हम क्या सोचते हैं ये बहुत असर पड़ता है जाने अनजाने में हमारे बिहेवियर पर. So we are talking about how to make ourselves emotionally strong, and that is what Kalpana is referring to. And I honestly feel and which is basically what I implement in my life, is I'm never focused on and worried about what other people are doing. किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसके घर टूट रहे हैं, किसकी डिवोर्सेस हो रही हैं, किसके बच्चों ने क्या किया. I don't focus on what's going on और ये आज के other. ज़माने में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू सेइंग यू आर नॉट फोकसिंग, कि यही बातें हैं जो सबको जो है वो पीछे लेके जाता है. दिस वेरी गुड दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड दैट व्हाट वी ऑल नीड टू जस्ट डू दैट. Because I feel, कल्पना, कि मेरे खुद के अंदर इतनी खामियां हैं, मेरे खुद के अंदर इतनी चीज़ें फिक्स होने वाली हैं, तो मैं किसी दूसरे के ऊपर फोकस करके अपना टाइम क्यों invest करूं in judging others when I can focus that time on building myself. And I you weren't here for the past several weeks, but I was telling our listeners that मैं जितना ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस कर रही हूँ, मैं जितना ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रही हूँ अपने आप को बेटर करने के लिए, मुझे उतनी ही ज़्यादा खुद में खामियां दिख रही हैं. जितना ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि देयर इज सो मच वर्क ऑफ सेल्फ ग्रोथ एंड हीलिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन मैं कर रही हूँ, उतना ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं दे कीप कमिंग आउट, दे कीप manifesting कि itself कि oh gosh, now I have to fix this, अब मैं इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, oh अब ये भी है. And then when you have children, तो फिर आपको between your kids and your parents you don't really need another critic, right? That's true. So attention shifting is very important, because आप किस तरह किस चीज़ के ऊपर attention कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर या अपने आप पर. क्योंकि जब अपने आप करोगे तो काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी, और अगर नहीं भी सुधरेंगी तो आपको लगे कोई बात नहीं, वक्त It's a journey. It just teaches you कि that there's so much work that you need to do on yourself, right? एग्जैक्टली. और कभी कभी फैमिलीज में भी कुछ हो जाता है, कोई कुछ कह जाता है, और अक्सर हम फैमिलीज के अंदर जो नज़दीक के लोग होते हैं वहीं पे जो है ज़्यादा हमें नाराज़गी या गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है कि हाउ कुड अपने हमारे ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं. लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने हो या पराए हो, लेकिन उनका अपना एक नेचर, तुम्हारा अपना एक नेचर है. जस्ट बिकॉज दे आर इन फैमिली डजंट मीन दैट यू दे आर नॉट सपोज टू. क्योंकि उनका अगर दिल किया या कभी कुछ ज़रूरत पड़ी, उनके नेचर के हिसाब से कुछ कह भी दिया, कुछ हो भी गया, यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि कोई बात नहीं, मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ. मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में हावी नहीं करूँगा या करूँगी. ये चीज़ सोचने के लिए आपको पहले तो बातें हैं कि मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि व्हाई आई एम स्पेंडिंग दिस मच टाइम. सो अटेंशन शिफ्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं. And it's important to realize that you're an imperfect being. And when you are an imperfect being, I mean, आप में खुद में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. We are a constant work in progress. We are constantly working on ourselves, and we are a constant work in progress. There's so much that we can do to build ourselves when we focus on ourselves, and when we don't take what others say personally. And then the other thing is कि जब आप इस जर्नी के ऊपर चलना शुरू करते हैं ना, where you are working on your self growth and your self enhancement, उस प्रोसेस के अंदर आपके बहुत सारे जो लोग आपके करीब थे, who you love, but वो आपसे आपकी उस ट्रेन से उतर जाते हैं, and different people start hopping on to your bandwagon, because आपकी आप you're changing, and आप लोगों की frequencies के level change हो रहे हैं. So
people who might have been your well wishers at one time, and they still might be your well wishers, and you might still love them, but they are no, you and them are, you're no longer on the same frequency. बिल्कुल एक खूब अच्छी बात मैं जो जानी है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ साइमा अगर कोई तुमको लगता है कि somebody is judgmental and they always dig out in you कि ये क्यों किया ये क्यों नहीं किया ऐसे तो always send blessings to them ये बहुत मुश्किल है करना क्यों लगता है कि भाई वो हमारी गलतियाँ कर रहे हैं और हम उन्हें ब्लेसिंग दे क्यों हम कोई महात्मा नहीं है लेकिन नहीं व्हेन यू डूइंग इट पहली तो बात तो आपकी अपने दिमाग की जो एंग्जाइटी है उसे आप कम कर रहे हो स्ट्रेस को कम कर रहे हो दूसरी बात यू आर एक्चुअली सेंडिंग अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देखो उसका भला हो ना हो जो कहते हैं कि भला होगा रिलेशन विल गेट बेटर या नॉट बेटर बट एटलीस्ट तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत 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 कम होगा एंड दिस इज समथिंग यू नीड टू फर्स्ट गेट इनटू योर माइंड एंड देन डू इट जस्ट कोशिश कीजिए कि जो आपको लगता है कि ये हमारे बारे में कुछ कहता है इनसे रिश्ता कभी ठीक से बन ही नहीं पाएगा सेंड ब्लेसिंग्स टू देम कि हम चाहते हैं कि उनका सब अच्छा ही हो उनके लिए भी अच्छा हो आपके लिए भी अच्छा हो बहुत राइट अच्छा होगा उनसे ज्यादा क्योंकि यू हैव एक्चुअली shifted your energy to something positive and you're making your aura very very positive by sending blessings to दुआएं देना बहुत अच्छी बात होती है चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो दोस्त को तो हम देते ही हैं तो ये चीजें भी बहुत मैंने सीखी है आई ट्राई दैट एंड दैट्स वेरी गुड क्योंकि उससे मेरा जो है आई थिंक आई एम मच रिलैक्स्ड और जैसे मैंने कहा था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन ऑल दिस तो इसके साथ जो है हम लोग अभी जाने वाले हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की ओर K2H1CS, Lucas, Nickney, 104.1 FM, K. Okay, so um, all right, so I'm back here. How's everyone doing? कैसे हैं सब लोग? I had actually had a rough day yesterday. It's been a rough week. It was a rough morning. There was chaos in my day and chaos in my morning, and I had to work on, shifting things, and I had to work on stabilizing myself. चीज़ें चल रही होती हैं ज़िंदगी में सबकी लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं ओके रेडियो कैरावान जी साइमा साइमा बात कर रही हूँ बिल्कुल ठीक यास्मीन आप कैसे हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी दुआओं में याद रखती हैं एंड थैंक यू थैंक यू बिल्कुल और अब बल्कि मैं अभी वही बोल रही थी कि मेरा खुद का हफ्ता थोड़ा सा क्रेजी था एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी तो मैं खुद भी ऊपर नीचे हो रही थी उसके साथ बट फिर मैं खुद भी मोटिवेशनल चीज़ें सुन के फिर मैं अपने खुद की लाइफ में बैलेंस लेके आती हूँ और बिल्कुल 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 और ये जिंदगी ऐसी ही है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आमीन 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 बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो लव यू टू थैंक यू ओके बाय बाय so that was such a cute phone call इतनी स्वीट कॉल थी हाँ वो उन्होंने कहा आप दुआओं का जिक्र कर रही थी तो आप लोग दोनों मेरी दुआओं में हैं एंड आप लोगों के लिए मैं दुआ कर रही हूँ एंड आई होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे आप लोग जो चीज़ करें आप लोग उसके अंदर आपको कामयाबी मिले तो see right there it makes such a huge difference right you can be that person who's sitting there and always judging others right or always
जो दूसरों में कीड़े निकाल रहे हैं, राइट? किसने क्या पहना है, किसने क्या ओढ़ा है, आप किसके घर खाने के लिए गए थे और उनका खाना कितना खराब था। अब इट्स नेवर एंडिंग, किसके बच्चे क्या And कर we रहे always हैं। get to see such people, right? And यस, but when I see now, मुझे पहले I used to feel bad more than angry. I used to feel bad about कि हाँ शायद मैंने ऐसे किया होगा. But मैंने now किया है, मैंने खुद ये सब कुछ किया है। it doesn't matter bother me anymore. So yeah, it's मैं दूसरों को क्या बोलूं कल्पना, ये सब चीजें तो मैंने खुद भी की हैं, exactly, और हम अभी सब भी करते होती भी हैं, हैं, right? बट कोशिश द थिंग इज इंटेंशनली आई डू ट्राई के ओह यू आर हियर, आई वाज लाइक Yeah, क्या that's कर why रही हो, I hop on there. I forgot. Okay, never mind. Yeah. Okay, so stay with me. I'm gonna switch my spot. Okay. अब relaxation का time है क्योंकि अब कल्पना is gonna take over. Yes, it's been Kalpana. All my devices. No, actually, it's not mine. Kalpana, there's your drink. Um, so we are changing our spots. So Kalpana is going to take over and play the music that Kalpana wants to play. Not that we play much, but whatever little we do, now I can sit and relax. I don't have to. All right, welcome back. आप सुन रहे हैं Heart to Heart only on your favorite radio station, Radio Caravan. With me, the one and only Saloni RJ Kalpana, और मेरे साथ होती हैं Thursday को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी खूबसूरत co-host. This is Saima. Let's touch lives together. Beautiful. और आज हम टच कर रहे हैं हमारा टॉपिक जो है इमोशन, हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हम ज़्यादा जो है अपने आप को वीक समझते हैं, लगता है कि भाई अभी कुछ नहीं होने वाला है और ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा हमने सोचा नहीं था, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों सुनाया हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अक्सर सबके साथ होती हैं, हमारे साथ भी होती रहती थी। लेकिन होता ऐसे कि जब आप इस चीज़ की जानकारी पा लेते हैं और अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर लेते हैं समथिंग टू द प्रोग्रेसिव लेवल, कि कोई चीज़ जो आपको अब दिल से अच्छी लगती है करने के लिए, तो वो चीज़ करने के लिए आप अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही होती है ना, जो कोई कह रहा है, हो रहा है, पीछे ऐसे हुआ था, आगे ऐसे होने वाला है, इसके बारे में आपको जो है तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इसकी जानकारी के लिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है, और स्पेशली आज के ज़माने में बहुत 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 ज़रूरी है। It's important to detach yourself from the outcome. This is something that I am learning. It's very difficult to do, to detach myself from the outcome, to become this bystander who stands there and watches, detached. So very difficult to do, but it's not impossible. So it is something I'm working on, and I'll keep you posted. Like I said earlier, I'm watching a lot of this person. His name is Joe Dispenza, and he talks a lot about neuroscience and physics and the brain chemistry and किस तरह से brain की thoughts को change करा जाए. It's very, very, very interesting listening to and learning from him. वंडरफुल वंडरफुल। और ये सारी चीज़ें जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चले, जैसे कि हम बात करें कि फर्स्ट थिंग जो वी वर टॉकिंग वाज you need to change your thinking style and then introspect yourself. That's very important. The other thing is, which is also very crucial, is having self compassion. कि अपने आप को पसंद कीजिए, अपने आप पे हमदर्दी जताइए, क्योंकि हम अक्सर जो है, जैसे हम अगर बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने कुछ किया तो हम प्यार से बोलते कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो और कोई बाहर वाला कोई गेस्ट आ गया घर पे, उस पर भी हम प्यार से बात करते हैं। लेकिन कभी कभार जब हम अगर कुछ ऐसे कर लेते तो वी जस्ट काइंड ऑफ लाइक why did I do that and I'm such an idiot, why? तो ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में अगर चलती भी हैं, then stop.
It's okay. You are special. Value yourself. That's very important. So self compassion, and then loving yourself and being compassionate with whatever happens, good or bad. Just that's also very important. अपने आप को कोसे मत, तो क्योंकि कोसने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि दूसरे को let you give them job to somebody else. You don't feel bad about yourself and don't slouch your behavior and don't do that. I think these things are also very important to be self compassionate. What do you say? Absolutely. I mean, everything is all about self reflection. Everything is all about um, दुनिया में आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं तलाश में, you know, वो चाहे तिब्बत के माउंटेन्स हो या नेपाल के माउंटेन्स हो या वो पिलग्रिमेजेस हो, but at the end of the day, जब तक you don't come to peace within yourself, जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा और आपको सुकून नहीं मिलेगा और आप you're not at peace within you, तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आपकी तलाश खत्म ही नहीं होगी, बिकॉज जो आप सारी दुनिया में भटक के ढूंढ रहे हैं वो सब इट लाइज विद इन यू. Absolutely. And the more you know what, something that I have realized it, the more you learn and get aware of all this, you will feel that there's no God and then God is just like within you. It's within you. You have to take a U-turn no matter, of course, I believe in God. I'm not saying that. Lekin, it's just a U-turn to your own soul. Just connect with your soul. And that was like I was telling in the beginning of the show, the beautiful analogy which you have given. And he just keep your soul and then look yourself, which is also you can do by self talking in front of the mirror कि क्या चीज़ें जो मुझे तंग करती हैं, अक्सर क्या चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बॉदर करती हैं या करता है, जो भी है तो आप लिख लीजिए या फिर दिमाग में रख लीजिए, एंड देन जस्ट सी दैट इफ यू आर वर्किंग ऑन इट, एक गोल, एक कैलकुलेटेबल एक गोल बना लीजिए कि एक हफ्ते के बाद आई एम गोइंग टू सी माई सेल्फ, डिड आई वर्क ऑन दिस, या फिर आपको एक महीना चाहिए तो महीने के बाद देखिए कि मैंने ये जो एक मेजरेबल गोल होना चाहिए सबका, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है आदर्शवाद बताते हैं कि हम ऊपर ऊपर से तो हो जाते हैं, लेकिन आर वी रियली वर्किंग ऑन दैट? So are you able to measure your goal that you have set for yourself, whether it's a 10-day goal or 1 week goal or just 30 days? See that if you have worked and how much you have worked. Even if it's a small step, that's also just embrace it and then just be applaud yourself, क्योंकि आपने कुछ तो किया अपने लिए, क्योंकि अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है. एंड आजकल के ज़माने में बहुत बहुत ज़रूरी है, जब दुनिया भागी जा रही है कि ये भी पाना है, वो भी पाना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन हमें अंदर क्या चीज़ जो खाई जा रही है उसके बारे में शायद कोई फोकस नहीं कर रहा है, कि उसके लिए जैसे मैं कहा कि उसके बारे में फोकस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप इस जिंदगी में उस वक्त तक आप यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल यू आर योर सोल इज एट पीस. सो हम समझ रहे हैं कि ये काम के प्रोजेक्ट्स हैं, या हम समझ रहे हैं कि ओके अब हमने लेक्सस ले ली है तो अब हमें यू नो मर्सिडीज लेनी है, या अब हमें ये लेनी है. एंड दिस इज नॉट टू से कि आई माई सेल्फ डोंट हैव माई ड्रीम कार. आई एक्चुअली हैव अ ड्रीम कार that I aspire to get. Yeah, But that sukoon, उस सुकून का कोई बदल नहीं है. That comes from within you, and you have to find it from within you. बिल्कुल. और जैसे आपने कहा कि भाई आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, लद्दाख चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर सुकून ही नहीं है तो वहाँ पर भी आपको कुछ मिल जाएगा कि अरे यहाँ ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे टेंट में हम सो सकते हैं या ये भी कर सकते हो. You will find something or the other, and you'll always find people around you will always be criticizing and not happy with things around them. No matter वो एसी में सोएं या फिर लेह लद्दाख में सोएं, कहीं पर भी सोएं, उन्हें कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, या आपको आपके पास वो लोग भी दिखेंगे साइमा जो कुछ ना होते हुए भी अपने आप को खुश रखते हैं. तो क्यों क्यों रखते हैं? क्योंकि उनका इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड दे नो कि इट इज़ ओके इफ इट्स नॉट देयर अराउंड देम, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स सेल्फ कंपैशन. एंड दूसरी बात है कि इमोशनल टॉलरेंस आपके पास कितना है, क्योंकि हम काफ़ी लोग जो इमोशनली टॉलरेंट नहीं होते हैं, कुछ हो जाता है तो इरिटेट हो जाते हैं कि जैसे हमने कहा था कि ओ माय गॉड दिस वी कैटास्ट्रोफाइज आवर सो मच कि हम खुद को कोसते हैं या दूसरों को कोसते हैं. तो दैट टॉलरेंस लेवल जो है बहुत कम होता जा रहा है लोगों में, स्पेशली बच्चों में भी. But that's all coming from anxiety too, right? Anxiety. And that's also coming from the fact that you think that it's okay for you to, you know, that quick result, that quick conclusion, that quick fix, right? That
that Yeah, quick fix. that's Do you true. think it's fine for you to just snap at someone, but it's all creates Yes, anxiety. because everything is like tip of the tongue. अभी अभी अगर you need to have a ड्राइव में जाते हो तो भाई स्टारबक्स 1 मिनट के अंदर आपको 1 मिनट के अंदर ही आपको दे देता है, नहीं देता है तो यू माइट सी सम पीपल माइट गेटिंग अपसेट विद देम। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो होते हैं कि हर चीज़ का रिजल्ट जल्दी जल्दी आना चाहिए, एंड उसकी वजह से जो है ये टॉलरेंस लेवल जो कम होता गया है, कम होता जा भी रहा है। तो अगर कोई चीज़ जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ स्कूल में कि when they say कि oh Miss Palma is taking time, मैंने कहा that's fine, anything that takes time is a learning time, and they repeat after that, and when they I love it because I think anything that takes time is a learning time। अच्छी चीज़ें जो है हमें लेसन सिखाती हैं, बुरी चीज़ें भी हमें लेसन सिखाती हैं, तो आपके ऊपर होता है कि आपको वो लेसन किस तरह से आपको लेना है, किस तरह से आप उसको अपने अंदर जो है वो मोल्ड करते हो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो डिस्पाइट ऑफ फीलिंग बैड एंड ऑल दैट, ये जो टॉलरेंस लेवल है इसके बारे में आप वर्क कर सकते हो। एक्चुअली पीपल डोंट रियलाइज, मगर जब एज पेरेंट्स जब आप अपने बच्चों के ऊपर वो प्रेशर डालते हैं, क्योंकि 89 आया है, 90 प्लस क्यों नहीं आया, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, बिकॉज ये स्टडी इनकम्स हैं, ये लुक्रेटिव जॉब्स हैं, तुम ये करो। और तुमने देखा है पड़ोस का बच्चा क्या कर रहा है, या तुमने तुम्हारे कजन को देखा है, या इवन वर्स व्हेन सिबलिंग्स आर कंपेयर्ड, तुम्हारे भाई को देखो, वो जॉब भी कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है। Parents don't actually realize that each and every person is different, and each and every person has come with a different purpose in this world, and they are going to behave differently because सबकी destinies मुख्तलिफ हैं। अगर आप सेम पेरेंट्स से भी पैदा होते हो और अगर आपके 10 सिबलिंग्स भी हैं, तो हर एक सिबलिंग का डीएनए डिफरेंट है, हर इंसान डिफरेंट है, बिकॉज हर इंसान की डेस्टिनी डिफरेंट है। You're a byproduct created differently for different reason and for a different purpose। तो जब पेरेंट्स एक दूसरे जब आप कंपेयर किए जाते हो या आपको पुट डाउन किया जाता है कि यू नो व्हाट, द स्पेशली द वन जो कि बात नहीं सुनता हो, राइट, बिकॉज पेरेंट्स फील कि बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में आए हैं कि वो पेरेंट्स की हर एक बात सुने, पेरेंट्स की जितने अधूरे ख्वाब हैं उन ख्वाबों को पूरा करें। मगर जब आप ये बोझ बच्चों के कंधे के ऊपर डाल रहे होते हो, तो देन kids start becoming distancing themselves from their parents because they feel that the parents are not letting them grow and letting them be themselves. That's very true. I think this assertiveness and this um, throwing our dreams upon them, टेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग साइमा, लेकिन अगर उस पर हम लोग पुश कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है क्योंकि कोई और ये कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो जो छोटा माइंड है जो डेवलप हो रहा है, जो then they become a teenager and they become adults and so ये सब चीज़ों में अगर ये पुशिंग और ये प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली उनका इमोशनल पावर तो बहुत ही कम ही होगा ना, तो वो अपने आप से कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। तो उन्हें इंडिपेंडेंट बनाइए। एंड देन वी ऑल्सो से हमारे शो में हम अक्सर जो कहते हैं कि ना कि स्पेशली क्योंकि दिस शो ऑफ कोर्स वी हैव regardless of any gender, I think आज के ज़माने में instead of being a perfect, ask them to be brave, ask them to be real। तो ये these things are very important for anybody, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप अपने अंदर नहीं डालोगे तो आई थिंक इमोशनली स्ट्रांग होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि आपको इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ। उसके बाद एक गाना प्ले करते हैं, दैट इज Hail to Nail Contracting serves our community. If your roof, rain gutters, siding and fence is affected with hail and windstorms and have sizable hail impact, or are missing shingles on your residential or commercial roof, please call Nisar Ahmed of Hail to Nail Contracting at 682-561-9795 for free inspection, claim assistant and estimate. They also install wood flooring, pergola, patio covers, and replace kitchen range hood. इसके साथ मैं सुनाती हूँ ये गाना जिसकी रिक्वेस्ट हमें आई है अंजना की तरफ से, वो सुनना चाहती हैं आप।
Hi Parunjit, hi Sonia, hi Sandhya, how are you? So I'm back again after a long break, after a very wonderful vacation. I came back and yet again with another show of women empowerment called Heart to Heart. And today we're talking about how to be emotionally strong, especially for the people who think that who are always living in the past or who are always have anxiety about the future. So उनके लिए ये है कि भाई just stop and then be mindful, being stay in the present and enjoy the moment, embrace the things that are happening around you, and one thing is shift your attention, because shifting your attention from the past and from the future and staying in the current is very important, क्योंकि जो अभी आपके साथ हो रहा है अच्छा हो या बुरा हो जो कुछ भी, because हर चीज़ जो है आपको एक लेसन दिखा सिखा के जाती है। तो भाई अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है तो पहले तो अच्छी अच्छी बातें सुनिए, और अगर कुछ बुरा भी हो जाता है तो इट इज़ ओके, क्योंकि वो बुरा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो इमोशनली स्ट्रांग हम तभी बन सकते हैं जब अपने अटेंशन को हम शिफ्ट करते हैं, एंड देन वी आर सेल्फ कंपैशनेट। जब हम अपने आप से हमदर्दी करते हैं ना, तो आई थिंक हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपनी चीज़ों पे हमने कोई बात नहीं हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। दीज आर द सम ऑफ द स्टेप्स व्हिच वी शुड डू, एंड बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो कैरावान एंड वी गोइंग टू कवर मोर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस टाइम। ऑलराइट, एंड अभी ये गाना भी छोटा सा ही है। Right now, we cannot play the song louder because the Facebook has blocked us for the copyright thing. तो इसलिए हम गाना जो हम प्ले कर रहे हैं स्टूडियो में currently, we cannot, you guys cannot listen to it. You ready? Sorry. Alright, that was a song requested by Anjana। अगर आप भी कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या इस टॉपिक के बारे में जो हम आज बात कर रहे हैं, हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इफ यू वांट टू शेयर योर टॉपिक ऑन दैट, योर विजडम ऑन दैट, हमारे स्टूडियो का नंबर है 2148173333। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट स्टेशन रेडियो कैरावान। बिल्कुल। एंड हम लोग इधर आते हैं और हम लोग इधर अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वी हैड अ कॉलर हु कॉल्ड अ बिट अर्लियर एंड she was so gracious and so kind and so wonderful, and उन्होंने कहा कि वो हम उनकी दुआओं में हैं और वो हमेशा हमें appreciate करती हैं कि we come here and we share our मैं मैं अपने लिए वर्ड विजडम नहीं यूज करूंगी, बिकॉज आई डोंट फील के आई हैव दैट विजडम, बट आई ऑलवेज कम हियर एंड से कि इट्स माय जर्नी दैट आई शेयर, माय जर्नी व्हिच इज a journey where I'm learning on a daily basis, and what I share is what I learn. And tomorrow it might be something different, but जैसे I feel like I'm like this river जो कि flow कर रहा है, and कहाँ ये कोई it just continues, right? And कोई like destination as such नहीं है, it's just all growth and it's just all evolving. एंड आपने कहा कि मैं विजडम नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपकी कोई बातें अगर किसी और को अच्छी लगती हैं तो वो उनके लिए विजडम ही हो जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू टू से दैट। लेकिन विजडम होता क्या है कि कोई अच्छी बात, कोई भी चीज़ जो दिल को छू लेती है, जो आपको करने का मन करता है कि भाई ये हमें करना है अपने अच्छे के लिए, या जिसे हम अच्छा फील कर सकें, क्योंकि जब हम अच्छा फील करेंगे तभी हम किसी और को जो हमारे आसपास है उन्हें अच्छा फील करा सकते हैं इमोशनली। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी चीज़ों को आपको रूल आउट करना पड़ता है ज़िंदगी से कि ये हमें नहीं करना है और ये हमें ज़्यादा करना है, ये हमें इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि सोच इज़ द बिगेस्ट थिंग। सो द थिंकिंग, द थॉट इज़ वेरी पावरफुल। तो ये जो सोच होती है वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप जो भी आपके मन में सोचते हैं, इवन इफ यू डोंट इवन इम्प्लीमेंट इट, इवन इफ यू जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो दैट इटसेल्फ इज एक्चुअली will be unconsciously or consciously visible in your behavior। क्योंकि आपके दिन में, जैसे अगर आप घर से अगर बहुत ही चिड़चिड़ेपन से निकलते हो और काम में लग जाते हो, तो आप सोचते रहोगे कि जो कुछ भी हुआ होगा, शायद वो आपको टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं मिला होगा, या फिर आप ड्राइवे बैकआउट करते वक्त शायद कहीं पे लग गया होगा। तो ये सिचुएशन एक आ गई, मसलन मैं बता रही हूँ।
तो ये सिचुएशन से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया और फिर आप अंदर गए, फिर आप किसी और से मिले तो आप उसको हाय भी नहीं बोलोगे क्योंकि आपके मन में गुस्सा आ गया, किसी और ने कुछ और कर दिया इन एडिशन, तो उसको भी आप अंदर कोसोगे या बाहर कोसोगे। तो दीज थिंग विल कंटिन्यूसली हैपन व्हेन योर थॉट इज नॉट प्रोसेसिंग कि इट इज ओके, इट Yeah. इज ओके एंड दैट्स इट्स ओके। कहने के लिए भी आई थिंक बहुत पावर चाहिए होता है इट्स ओके कहने के लिए, और implement that as not just say it but just be apply on that. And another thing Saima, एक और कि assertive communication with yourself and with people around you, क्योंकि I'll just give you a small example कि कोई भी अगर काम करना होता है ना तो अक्सर especially for the women they don't ask help of others, वो खुद ही कर लेती है कि ये भी करना है वो भी करना है सब मुझे करना है, मल्टीटास्किंग करना है। why just take help of others, it is okay अगर तुमसे नहीं होता तो बस पूछ कर तो देखो, हो सकता है कि वो हाँ बोले या ना बोले, या कहो कि भाई ये मेरे से नहीं होता, ये आप करें। हेल्प मांगी, मदद मांगी लोगों की, अपने हस्बैंड की मदद मांगी, बच्चे बड़े तो बच्चे छोटे, इवन यू कैन मेक इंडिपेंडेंट, इवन यू कैन स्मॉल, उनकी मदद मांगे। काफ़ी लोग स्पेशली जो है एशियन वुमेन अपने इंडिया पाकिस्तान में मदद नहीं मांगते, तो लगता है कि हम कर लेंगे, सारी चीज़ खुद ही पे कर लेते हैं, और जब नहीं हो पाता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई उसके बाद फिर एंड ऑफ द डे देयर पावर बैंक इज सो लो कि वो लोग फिर उनके पास एनर्जी नहीं रहती है। तो कोई अगर आके पूछेगा, बच्चा के पूछेगा मम्मी मुझे ये चाहिए, तो उन्हें हम चिड़चिड़ापन से भेज देते हैं कि जस्ट गो अवे, मैं सुबह से बिजी हूँ। भाई ठीक है, सुबह से आप बिजी हो क्योंकि आपने इसको बिजी रखा है। लोगों की मदद मांगे, हेल्प लीजिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद टेकिंग हेल्प, नथिंग रॉन्ग विद पीपल। इससे आई थिंक रिलेशनशिप भी आई थिंक ज़्यादा पनपते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स यू आर जस्ट एंड इफ दे डू इन देयर वे, छोड़ दीजिए कि ऐसे नहीं कि भाई परफेक्शन ये ऐसा ही करना है। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू लाउड एंड अटेंशन शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। And I think I think women think that women multitask all the time, and they're doing 20 different things at the same time. And women think that They're it's not it's doing, a they're thinking about the yeah. other 19 things. But they think that it's a big achievement, because I hear women say कि हम ने मल्टीटास्किंग कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, फलाना भी कर रहे थे। बट यू एक्चुअली डोंट रियलाइज कि वो जो आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो, because we always say कि men can't multitask and we multitask. So हम ये realize नहीं करते कि multitasking gives people anxiety. And when you are multitasking, तो आप कोई भी एक चीज को proper तरीके से complete नहीं कर पा रहे हो, because आपका focus जो है वो बिखरा हुआ है, and your attention is all over the place, because you are like, okay मुझे ये भी करना है, मैं खाना भी पका लूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, मुझे बच्चों को भी स्कूल से पिक करना है, मुझे उनको उस पियानो की क्लास के ऊपर भी like, but when you're doing so many things, you are being consumed with anxiety, और आप बच्चों को के अंदर भी एंजाइटी भर रहे हो, बिकॉज आप बच्चों को ये कि अब ये क्लास हो गई है, अब दूसरी क्लास पे जाना है, फिर उसके बाद तीसरी क्लास है, आज ये है कल वो है। सो क्यों वो जो वक्त होता है वो बच्चों का, जब आप when you're little and your kids, right, when you can say whatever, when you can do whatever, you remember those as the best moments of your life, because it's a time where you can be you, and without that burden of anxiety on you. तो अनदर आपने नोटिस किया कि जब हम ये सारा काम करते हैं और बच्चे स्पेशली छोटे हैं, तो ये सब करने के बाद व्हेन यू आर ऑन द फोन यू डूइंग, तो बच्चे आके फिर वो पूछते रहते हैं, जब भी मैं फोन पे होती बच्चे आ जाते हैं, व्हाई? बिकॉज दे वांटेड अटेंशन, राइट? क्योंकि उनके साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कीजिए, अनकंडीशनल वक्त स्पेंड कीजिए, उसके बाद उन्हें बताइए कि दिस इज माय टाइम, बेटा ये हमारा वक्त है, मैं थोड़ी देर में अपने जस्ट वांट टू बी, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, इफ यू वांट नोबडी वांट टू डिस्टर्ब यू, तो बोले कि ये मेरा वक्त है, यू डू योर प्ले एंड लेट मी डू इट। कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदर्स को एक गिल्टी फील होता है कि बच्चे ने पूछा और हमने मना कर दिया, कोई बात नहीं। इफ दैट आवर इज योर टाइम, से दैट इज माय टाइम। योर चाइल्ड विल नॉट मे नॉट अंडरस्टैंड टुडे, लेकिन धीरे धीरे वो समझेगा कि हाँ दिस इज मॉम इज वक्त। बोलो कि मैं सुबह से काम करूँ बेटा, मुझे ये अपने वक्त चाहिए। पैम्पर योरसेल्फ एंड डोंट फील गिल्टी। बर्डन मत कीजिए अपने दिमाग पे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको भी अपना वक्त चाहिए। चाहे आप सुबह से काम कर रहे हो, तो थोड़े कामों को थोड़ा सा कम कर लीजिए। And you don't need to function at 120% of your capacity. You should actually function at 80% of your capacity, because वो जो additional चीजें बीच में जो the things that you were not prepared for, when they come into your life, then वो 80 to 100 के बीच की जो जगह है वो उसमें पूरी हो जाएगी. But most women they are
are, कि ये भी करना है वो भी करना है, इतनी चीजें अपने ऊपर लाद लेते हैं, right? And then you're consumed with anxiety, and then you get upset with the people around you, with your spouse, that they are not contributing. But वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की की जो लेवल है, अगर 5 चीजें करनी है तो 5 चीजों के बजाय आप 3 चीजें कर लो. हाँ, बिल्कुल, क्योंकि why you have to just check mark everything in the bucket list? कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, एक पियानो but की when क्लास में बच्चे नहीं जाएंगे तो ये थोड़ी आइंस्टाइन बन जाएंगे या नहीं बनेंगे. जिस आप whatever your destinies are and where your destinies right, are meant and we to all take do you. that unconsciously, especially when we're young mothers and young And parents. I've done it too. I've done it too, but there has to be either you realize by yourself or कोई कहता है तो आप उसकी समझिए, क्योंकि I did that too, and I'm telling it on air, क्योंकि 5 दिन मेरे बेटा, I used to send them for every different classes की, पता नहीं उसे क्या तो बनाना था मुझे. But when my mom came, when my parents came from India, and then मेरी मम्मी ने कहा कि why are you running around like that? तुम आती हो फिर थोड़ा खाना वगैरह खा ली, जल्दी जल्दी फिर थक जाती हो. Why do you want to keep him so busy? तुम उसके साथ में spend नहीं कर रही हो, and I've done that too, but I realized it, and then I stopped. मैंने कट शॉर्ट कर दिया बिल्कुल. उसके बाद when I did that, okay नहीं, तो उसको सिर्फ 2 क्लासेस में ही डाला, and उसके बाद भी when he was not interested, I took him out, because I Yeah. think that is okay, that childhood you need to just, especially for the young parents, क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं, especially you, I always say you have a blessing because तुम्हारे बच्चे छोटे हैं. Spend time with them, क्योंकि this is something you cherish lifelong. क्योंकि बच्चे, time flies, we all say that बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, but that memory that you are actually cherishing right now is lifetime. I think that you need to just cherish yourself. And I think, communication, yes. and I think the biggest thing that you can do for your relationship with your child is you can spend time with your child, like you said. And make your child feel validated. That's what they want. Kids want to feel validated. They want to feel heard. They In want fact, to know their validation is parents are something we listening all, to them. yeah, everybody wants, because when they don't get validation from one group, they switch out to different group to validate. Okay, was I wrong or was I correct? At least this always happens regardless of their children or old age. But I think yes, but being emotionally strong is very important, because that is the key for us to go and do anything that we want to do, or even if we don't want to do, and it is to say it's okay. So to say it's okay, you have to be emotionally strong in the first place. So thank you for connecting, my friends, live on air, live on Facebook. And if you have anything to add on this topic, to how to be emotionally strong, you can just shoot a comment on this section, and or call the studio number, which is 214-817-3333. Thank you all for being here. Thank you for watching. We come to you every Thursday from 1 to 3. If you're in the Dallas-Fort Worth area, you can listen to us on 104.1 FM, 700 AM. Otherwise, you can listen to me where you're listening right now, because I do stream live. And so I am going to disconnect from my YouTube stream and LinkedIn stream, and we will continue on Facebook Live. Until next time.